Good morning, students. In the last class, we discussed regarding your atomic model, first of all atomic model, that is Thomson's atomic model, where he proposed that atom is nothing but a sphere of positive charge where the electrons are dipped or embedded like the plums in a pudding. So, Thomson's plum pudding model. Quickly, it would explain the neutrality of atom. केवल गोटे property बुझे पड़ता कौन? ना it could only explain the neutrality of atom, but failed to explain all other properties. So it was discarded. Then next, Rutherford put forward his atomic model. But before that, he did an experiment called Rutherford's gold foil experiment. प्रथमे से Rutherford's gold foil experiment करते So ताहरी आउटकम को बेस करके सेटा का एटॉमिक मॉडल प्रपोज करथिले. So we will discuss Rutherford's gold foil experiment first. Rutherford's gold foil experiment. So this experiment gave him an idea regarding the structure of atom. Say experiment को से कौन करते हैं? ना he got an idea regarding structure of atom. So what he did? ना he hit a thin gold foil of thickness around 100 nanometer with alpha particle. So he hit a very thin gold foil of around 100 nanometer thickness. So this is the gold foil which was hit by alpha particle. एवं ताकि जाने पे कौन करते हैं? सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विथ जिंक सल्फाइड. He used a circular screen coated with zinc sulfide. Zinc sulfide का काम हम कोई सकती to detect the unseen radiations. You know, he used a circular screen coated with zinc sulfide, so that whenever any radiation strikes at any place, small spark will come out. जो भी radiation का hit करेगा, उसे छोटा spark आएगा, so that the invisible radiations can be detected. इन जो ना हमें देखी पर ना करे, तब हमें detect करेंगे. So the alpha particles are reflected in many different ways, like this. एठू किसी बुझी पारिबोनी मु आगे एक्सटेंडेड डायग्राम पे ड्रा कर दोची. सपोज कौन कहिसी दिस इज द गोल्ड फॉइल. बहुत पतलाटे नेइतले, थिकनेस केते थिला अराउंड 100 नानोमीटर. 100 नानोमीटर मींस 10 to the power -9 मीटर. सो बहुत पतला गोल्ड फॉइल लेले ताको हिट करले कोथरे ना अल्फा पार्टिकल. सो ही hit a thin gold foil with alpha particles, and to see the deflection he coated the circular screen with zinc sulfide. Zinc sulfide का काम कौन to detect invisible radiation. Okay, तो इधर एक्सटेंशन में कर दूची. गोल्ड फॉइल जदे बहुत पतला कर दिया जाए, ऑलमोस्ट गोटे लेयर गोल्ड एटम टाइप को रहइबो. So this is how the thin gold foil will look like. एमती दिसिबो thin gold foil टा. वो एटार एक्सटेंडेड वर्जन टा ही करछु to show you the type of deflection which was there by the alpha particle. Alpha particle can be deflected here. So majority of the alpha particle were through the gold foil undeflected. संख्याधिक alpha particle बिना कोनोसी बाधा विघ्न पास करी गयथिले. बहुत रेयर रिबाउंड हेतिले. जो फोटो देखछे से फोटो एतरी आस्तिले. किछि अल्फा पार्टिकल कोन हेतिले ना स्मॉल डिफ्लेक्शन हेतिला. But majority जेंति कहली, majority of the alpha particle pass through the gold foil undisturbed. जेंति किछि नाही, gold foil रे no hindrance, no objection is there, सेंति पास करी. So एटार एक्सटेंडेड वर्जन होचे एटा.
So this is the thin gold foil, it has the gold foil, and these are the alpha particles. Okay. So तीनटा conclusion कौन करेगा? Write one by one. कौन देखिलो? The majority of the alpha particle pass through the gold foil undeflected. Straight, जेमती as if nothing is there within the gold atom, सेमती pass करिएगी. So point one, majority of the alpha particle pass through the gold foil undeflected. Okay. So this is the first observation which he did. लेकिन वो चुनो So, what is first observation? The majority of the alpha particle pass through the gold foil 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 undeflected. बिना कौन सी डिफ्लेक्शन में देखो इट इज क्लियरली विजिबल सब संख्याधिक कौन करते स्ट्रेट पास करते बिना कौन सी डिफ्लेक्शन में सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फोइल अनडिफ्लेक्टेड तापर कोन देखिलो किछि एथि देखो गोटे मु देछि एग्जांपल एथि डिफ्लेक्शन दिखे छि एथि स्लाइड डिफ्लेक्शन है सो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स some of the alpha particles were deflected by small angles. अल्प एंगल तैयारी करके ସେମାନେ डिफ्लेक्शन हेबे देखो एठी गोटे जाईछि एठी गोटे जाईछि सो some of the alpha particles were deflected by small angles and the rarest of the rare एठी गोटे एग्जांपल देछि देखो जो लाइटरा रिबाउंड हे एके सेही पोजीशन को पळे आछि सो एमटी जाईना देखो एठी बारे ही की स्ट्रेट बैक करी एटा पजे रिबाउंड हो सो a few that is 1 in 20,000 20,000 रे गोटे alpha particles rebounded from their path जो वाटे जाउथिले से वाटे बैक करियसे ओके so this is the Goldfarb experiment and these are the observations कोन कोन देखिलो majority of the alpha particle pass to the Goldfarb undeflected बुझियाला second point some of the alpha particles एठी गोटे देखो एठी गोटे देखो we are deflected by small angles and a few एठी गोटे एग्जांपल देखो केते 20000 गोटे 1 in 20,000 alpha particles rebounded that means जो वाटे जाइथिले से वाटे बैक करियसे so rebounded from their original path so these are the observations made by Goldfarb experiment so based on these observations the conclusions would be like this कोन conclude कले अपन देखिवाले so I think you must have drawn these images you must have delete करछिबे एबे लिखे देबा बता एही ऑब्जर्वेशन ऊपर बेस करके कोन कंक्लूजन हम देखिबाले so these are the observations then conclusion याकू बेस करके कोन कंक्लूजन ही पड़े देखबा majority of the alpha particle pass through the Goldfarb undeflected किसी एमती बाधा विघ्न नहीं सेमती पास करले सपोज तुमको गोटे विराट प्लेग्राउंड रे दौड़िया ପାଇଁ कहजियो सेंटर रे गोटे फुटबॉल लखाइ दो सो इमेजिन ए प्लेग्राउंड ऑफ 5 किलोमीटर रेडियस गोटे प्लेग्राउंड इमेजिन करो गोटे विराट प्लेग्राउंड इमेजिन करो जहां सेंटर रे गोटे फुटबॉल टे रही सेंटर रे गोटे फुटबॉल रही ता रेडियस होची 5 किलोमीटर so imagine a large playground of radius 5 km center रे कोन बनाइछि गोटे फुटबॉल टे अछि
तुमको कहला यू आर आस्क्ड टू रन इन दैट ग्राउंड मैक्सिमम चांसेस अछि कर तुम कोनो से बिना कोनो से हिंड्रेंस ऑब्जेक्शन में स्ट्रेट पास कर जियो स्ट्रेट दौड़ी बाहर जियो जेहेतु मैक्सिमम स्पेस कोन अछि प्लेग्राउंड रा वैकेंट अछि बिकॉज़ मैक्सिमम स्पेस इन द प्लेग्राउंड इज वैकेंट तेणु कौन हम यू विल रन थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन कौन सी बाधा विघ्न बिना तुम से फुटबॉल ग्राउंड रे दौड़ी परिबो तेणु से कौन कहले आटम हैज लार्ज वैकेंट स्पेसेस जदि हम आटम को कंपेयर करबा आटम का एई टाइप रो विषय को आटम तो सेंटर रे ना सबको को मास आउ आटम साइज जदि 10 मीटर हुए आटम रेडियसिटी -10 मीटर हुए सेंटर जो मास रही जो हम न्यूक्लियस कहूँ सी हो केते 10 -15 मीटर तेणु आम कंपेयर कर आटम विथ ए लार्ज प्लेग्राउंड जो कि सेंटर में रही न्यूक्लियस आकार फुटबॉल टा तार रेडियस केते 10 -15 मीटर आउ जोटा प्लेग्राउंड कहूँ से 10 मीटर तेणु लास्ट स्टेज जंती एई पडियाटार बहुत गुडा जागा फांका अछि सेंटर रे फुटबॉल अछि तुम दौड़िया पे कह जाए कौन सी बाधा विघ्न बिना तुम दौड़ी जाई परिबो विदाउट एनी हिंड्रेंस वी कैन रन थ्रू दी फुटबॉल फील्ड सेंती एठी भी जाई परछुती व्हाई बिकॉज़ तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ला देयर आर लार्ज vacant spaces inside atom ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡା vacant space ଅଛି that's why majority of the alpha particle pass through unelectroplated ତେଣୁ atom ରେ maximum ଜାଗାଟା vacant ଅଛି କୌଣସି ସେଥିରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ନାହିଁ ତାପରେ next ଯଦି ମାନେ ସପୋଜ ଭାଇ ରନିଂ ତୁମେ ଟିକେ ଫୁଟବଲ ଦ୍ୱାରା କୋପି ହେଇଗଲ ତାହେଲେ ଚାନ୍ସେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଥିବ ଡିରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ सो जब फुटबॉल साइड रे बाजी गलो ताले कोन हो ना टिके डिफ्लेक्शन हो तेनो कोन बाला ना देयर इज सम तुमको थॉमसन एटॉमिक मॉडल कोन पाइतला द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम किंतु एठी सेमती नै जदि सेमती थांता अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज आउ जदि भीतर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता ताले सब जगह डिफ्लेक्शन होता एवरीवेयर देयर विल बी डिफ्लेक्शन जदि थॉमसन एटॉमिक मॉडल ता ठीक ही थांता कहीं ना पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करिवो बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हेकी नाही सब जगह पॉजिटिव चार्ज कोठी अछि ना इट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर सो देयर इज सम mass at the center of the atom किसी मास अछि जा पर की स्लाइड डिफ्लेक्शन होइछ with positive charge तो ता चार्ज केते ना निहाती पॉजिटिव चार्ज अछि जा फल की कोन होछि ना डिफ्लेक्शन होछि तले फर्स्ट पॉइंट होछि कोन ना देयर आर सफिशिएंट वैकेंट स्पेसेस इनसाइड द एटम सेकंड पॉइंट होछि कोन देयर इज सम मास एट द सेंटर ऑफ द एटम with positive charge which carries positive charge काहे की ना alpha particle I already told you is positively charged so when it comes in contact with another positive charge it gets deflected okay तो deflection केते हबो सेटा आउट पॉजिटिव चार्ज संस्पर्श रे आसीबो थर्ड रिबाउंड होची कोनची केते रिबाउंड हबो ना when it straight केते आसीला दौड़ी मतलब एठी फुटबॉल देरे बाड़ी हैला ताले से बैक कर जिवो so the whole mass थर्ड कंट्रोल कोन हबो ना सब तक मास सेंटर रे फ्लो होची the whole mass of the atom is concentrated at the center सेही पई सेही जे बारे होची से कोन करची रिबाउंड करी होची तेनु based on these three observations there are three conclusions कोन ना atom consists of large vacant spaces atom रे mostly vacant space अछि आउ किछि mass is some mass at the center of the atom which carries positive charge and the whole mass of the atom is concentrated at the center तो ताकि बेस करके से मेजर करले जदि एटॉमिक रेडियस हुए तो -10 मीटर एटा होची तो एटॉमिक रेडियस जदि एई ऑर्डर हबो
जेमती कंपेयर करछि फुटबॉल जो सेंटर रहला त रेडियस 5 किलोमीटर पड़ियाटा हबो सेमती एटा होछि न्यूक्लियर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस सेंटर रे जो सबतक चार्ज ठूल होइछि जोटा पॉजिटिव चार्ज से होछि तार रेडियस होछि 10⁻15 मीटर तो हम कंपेयर करबा कासे समान हो ना व्हेन फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज फुटबॉल फील्ड विथ रेडियस 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर ओके 5 किलोमीटर रेडियस थिबा गोटे विराट फुटबॉल फील्ड रो सेंटर रे जदी हम गोटे फुटबॉल रखिबा ताहले सेही पड़ियाटा हबो एटम आ फुटबॉलटा हबो न्यूक्लियस ताले सेटू कंपेयर करनियो एटम रो केते बड़ स्पेस वेकेंट रहिछि आउ सेंटर ही सबतक मास ठोल रहिछि सो दिस इज डिफाइनिंग ऑफ your Goldfein experiment kon na atom has large vacant spaces there is some mass at the center and the whole mass is at the center ए तीनटा conclusion hela okay so based on this Rutherford proposed his atomic model e point ra mon rakhibo chua next we will discuss Rutherford's atomic model point we discuss करछि you have to note it down so what we found now atom is broadly divided into two parts an atom is broadly divided into two parts kon hoichi the whole mass of the atom is at the center whole mass of the atom is at the center jaku se naam deli he named it as nucleus the whole mass of the atom is at the center which is named as nucleus then surrounding nucleus bahar ki jaga par pele it is called extra nuclear part so the region the space surrounding the nucleus is called extra nuclear part it is called extra nuclear part re there are circular paths called orbits extranuclear part kon achi na circular paths called orbits the extranuclear part contains circular paths called orbits ka kaam kon na the electrons they used to revolve around the nucleus in this fixed circular path to kon hochi chua na eta amekara rahila center re nucleus bhitor ki ke rahile neutron and proton so what is the charge of nucleus neutron is neutral proton is positive charge so nucleus charge kora ijo positive ta chari pate ke rahile na fixed circular path jaha ka kohuchu orbit okay orbit ro kaam kon na the electrons they use to revolve around the nucleus in this fixed circular path so for point 1 atom is broadly divided into two parts point 1 se अनुसार लिखिबो this is the first assignment what point 1 लिखि पठेबो atom is broadly divided into two parts nucleus and extra nuclear part so this is the first point atom is broadly divided into two parts one is nucleus and another is extranuclear part then point 2 the whole mass जदि हम last class में कहितली the mass of an atom is due to presence of neutrons and protons because the mass of electron is taken to be negligible जेतु इलेक्ट्रॉन मास ता negligible लउछु mass of an atom is due to presence of neutron and proton तेणु सेंटर रे सबतक मास ठुला देखो the whole mass is concentrated at the center काहे कि सेंटर रे न्यूक्लियस भीतर के रहला this is the nucleus भीतर के रहला the neutrons and protons बुझा so whole mass of the atom is at the center ता चारि पटे लार्ज वैकेंट स्पेसेस अछि से वैकेंट स्पेस कोन अछि what which are there now the circular paths called orbits अछि ता चारि पटे orbit रो काम कोन the electron used to revolve around the nucleus in this fixed circular path this is point number 2 the whole mass of the atom is concentrated at the center because it contains neutrons and protons inside it and
due to presence of protons, the charge of nucleus is positive. The nucleus of charge positive है गला. Then electrons they used to revolve around the nucleus at high speed. High speed is बोली रे. कोठी ना fixed circular path called orbit. So because this model is comparable to your solar system, this model is also known as planetary model. Rutherford's planetary model of atom. कहीं ना solar system से resemble solar system कौन है? Center में sun है. There is sun at the center, and the planets they revolve around the sun in fixed path. जल्दी से path का elliptical है. In fixed elliptical paths called orbits. Efficiently fixed circular paths called orbit. So this model is very well comparable with your planetary model. Okay, that is your solar system. It is also known as Rutherford's planetary model of atom. Point to one, the whole mass is at the center and it contains neutrons and protons. Therefore, nucleus has positive charge, and in the extranuclear path, what are there? The circular paths are there called orbits, in which the electron revolve around the nucleus. Mindfully सुनो ताकि मतलब point wise करके लिखी पढ़ते हो. Okay, so it contains circular paths called orbits, and the electron used to revolve around the nucleus in these fixed circular paths. Then point 3%. अच्छा देखो nucleus of charge होची positive, ता पाखर वाला के electron बुलुची, से होची negative charge. So there exists an attraction force of attraction between oppositely charged particles. The कौन कौन है? Electrostatic force of attraction. Okay, so the force of attraction existing between oppositely charged particles is called electrostatic force of attraction. तेणु ये कौन करेगा? Electron will be attracted towards the nucleus because it is oppositely charged. This force of attraction, so it is so here the electron will be attracted towards inside, that is towards nucleus, and this force of attraction is called electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. तेणु कौन करिवो ना से इलेक्ट्रॉन टाको निजान को अट्रैक्ट करिवो. जदि अट्रैक्ट करिवो इलेक्ट्रॉन टाकी मर्ज करजो न्यूक्लियस रे एटॉमिक मॉडल विल कोलैप्स. बट इट नेवर हैपन सेमति हुएनी. काई हुएनी ना because electron is rotating at a very high speed. ताहले there is another force which is operating from inside towards outside. Electron ने जो high speed में बुलुची outer force inside to बाहर को काम करछ. It is called centrifugal force. It is called centrifugal force. जानी से centrifugal force को कहते हैं. Suppose you tie a stone with a string. गोटे सूतारे गोटे पत्थर बांधिलो ताको बुलेइलो ताले कोन होला? It starts एति बड़ सूतारे गोटे पत्थर बांधिलो ताको बुलेइले कोन हो? से सर्कुलर पाथ में बुलिबो. It will start rotating in the circular path. Constantly गोटे फोर्स बाहर को काम करछि निकल जाइबो. बोले तो सूताटा छिड़ी गला ताले कोन हो? ए पत्थरटा यार से बुलेइके टेंजेंशियली बाहर पड़े. It will be moving in a tangential direction. It is proof of the one that there is a force operating on a rotating body from inside towards outside. This force is known as centrifugal force. तेणु गोटे rotating body उपरे गोटे force काम करछि center towards outside जोटे कहा जाए centrifugal force. तेणु एठी कोन होछि? भीतर को टाणुछि electrostatic force, बाहर को टाणुछि centrifugal force. These two counterbalance each other. The electrostatic force of attraction is counterbalanced by the centrifugal force. So like electron जेजार orbital fixed position ले rotate होंगे. So like merge कर जाती नहीं. So this is the point 3. Okay. So these are the 3 postulates of Rutherford's atomic model. Convert postulate 1: atom is broadly divided into 2 parts. Coincidentally, postulate 2: neutron and the whole mass of the atom is at the center because it contains neutrons and protons, and therefore the charge of the nucleus is positive, and the electron they used to revolve in fixed circular path called orbits. Okay. Point 3: there exists a force of attraction between oppositely charged nucleus and electron, which is called electrostatic force of attraction, which is counterbalanced by the centrifugal force, which is operating from inside towards outside on a rotating body. जो गोटे रोटेटिंग बॉडी ऊपरे गोटे फोर्स इनसाइड और आउटसाइड काम करछि ताको जे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भीतर को टाणुछि, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को टाणुछि.
So they counterbalance each other, and that's why electron used to revolve around the nucleus in Higgs circular path. So these are the three postulates of your Rutherford's atomic model. Okay. So students, this is for today. Next class we will discuss the failures of Rutherford's atomic model and the development towards Bohr's atomic model. So thank you all. See you in the next class.